We have already seen antipsychotic drugs from pharmacology point of view. We are going to discuss same chapter from chemistry point of view. What is important from chemistry of that antipsychotics and antidepressants. So both we will try to finish today itself. Antipsychotics as well as antidepressants. From chemistry point of view, only classification, chemical classification, then its SAR part, lead molecule, SAR part, and then we'll try to understand the structure of drug, IUPAC name, because most of the time they used to ask question from these points only. So classification from medicinal chemistry is important. Again, SAR part of medicinal chemistry is important. Then structural aspects, that is the structure of drug and its IUPAC name, and sometimes, but rarely they used to ask question on synthesis. Rest of the parts all are covered in the pharmacology. So like mechanism, we have already revised 2-3 times classification and all that. In the medicinal chemistry, you just have to remember the SAR part of that structure of drug, IUPAC name, and if you can do synthesis, that's it. Okay, so we'll see it. So first, antipsychotics classification. We have already seen this classification 2-3 times in the pharmacology. Okay, but again I would like to revise it for you. So classification of antipsychotic. First, what do you mean by antipsychotic? These are the drugs used in the treatment of psychosis, major psychosis like schizophrenia and mania depression. Okay, so antipsychotic drug. So they are classified depending upon their chemistry, depending upon their chemical structure. Some are the derivatives of phenothiazine ring. So those drugs which are derivatives of phenothiazine, they are known as a phenothiazine derivative. So in that you are going to have different drugs. You are listed over here. So chlorpromazine is there, prochlorperazine is there, trifluperazine and promazine. Okay. So there are also another examples we have already seen in the pharmacology. Phenothiazine's derivative means they will have phenothiazine nucleus in their structure, and chlorpromazine, prochlorperazine, trifluperazine, thyroidazine, promazine. Okay, all these are the phenothiazine derivative. But in that also you have different classes. So depending upon the side chain. उसमें साइड चेन कौन सा है? फिनाइल पिपरिडीन डेरिवेटिव, डायअमाइनो प्रोपिलीन डेरिवेटिव, डायअमाइनो प्रोपाइल डेरिवेटिव, there is alkyl amine derivative, piperidine amine derivative, piperazine side chain containing phenothiazines, piperazine side chain. So we are going to see that. Second class, in that antipsychotics you have butyrophenones. So in that you are going to have haloperidol, droperidol, fenperidol, etc. etc. Raoul-Fay alkaloids are there, like reserpine is there, risacinamide is there. Then miscellaneous drug, in that new drugs are there, pimizide, molindone. Now, lead molecule from this antipsychotic drugs is nothing but the phenothiazine. This is the structure of phenothiazine. You have to draw 3 rings, 3 रिंग निकालने का है आपको बेंजीन रिंग. जो सेकंड नंबर करेंगे उसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन है. सो नंबरिंग कहाँ से करता है? So this carbon is known as 1, carbon number 1, carbon number 2, then 3, then 4, and this sulfur is named as a carbon number. Okay, sulfur is named as a 5, then 6, 7, okay, then 8, 9, and this nitrogen is known as a 10. So sulfur 5, nitrogen 10. You have to remember this numbering. This ring is known as a phenothiazine ring. At the nitrogen you have side chain. At the nitrogen you have first alkyl connector. CH2, 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 means propyl group is there. CH2, 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 alkyl connector, and then nitrogen, and again R means again substitution. So most of the time it is a dimethylamino. So this is the basic skeleton of your phenothiazine. So you have to remember, okay, phenothiazine basic skeleton, and all phenothiazines, they are the derivative of this ring structure. All phenothiazines, they are the derivative of this ring structure. So numbering you have to remember. This carbon is numbered as carbon number 1, and you have to go in this way 2, 3, 4, 5. This sulfur is numbered as 5, then 6, 7, 8, 9. Then this nitrogen is numbered as 10. Okay. Below this nitrogen there is a alkyl connector known as a propyl. Okay. So phenothiazine ring, then alkyl connector, and then terminal amine group, terminal nitrogen. So dimethylamino group is there. So this is the basic skeleton of phenothiazine. Okay. So it is important, numbering is important, positions are important, because
if you want to understand the SAR part, structural activity relationship, so you have to remember the numbering, you should know where is the position. So as there, for example, यहाँ पे एक लिखा है X, so at a carbon number 2, X means what? Here you can attach some halogen atom. Okay. So we are going to see, but basically you should know the basic skeleton of this phenothiazine ring. This is the basic skeleton. Remember, phenothiazine ring, alkyl igniter and terminal amine group. Okay, terminal amine group. So next part we'll see SAR of phenothiazine. So structural activity relationship of phenothiazine. So they used to ask question, एक दो बार question आ चुका है जैसे ये. So the nitrogen in the phenothiazine ring, terminal nitrogen of side chain should have how many number of carbon atoms in between for optimal activity. So I will explain that. एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आ चुका है कि जो रिंग का नाइट्रोजन है और आपका जो साइड चेन में नाइट्रोजन है उसके बीच में कितने कार्बन होने चाहिए फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी. सो विल सी वन बाय वन. फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन withdrawing group at a carbon number 2, that means at X. Electron withdrawing group at this point X increases the activity. Which activity? Antipsychotic activity. So chlorine in case of chlorpromazine. So in case of chlorpromazine, so here at a 2 position there is a chlorine. Neuroleptic potency is increased in order. For example, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 जो X है, X की जगह आप ये सब डाल सकते हो. So X की जगह आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल सकते हो, हाइड्रोजन डाल सकते हो, साइनो ग्रुप डाल सकते हो, मिथाइल ग्रुप डाल सकते हो, क्लोराइड एंड डाइमिथाइल फ्लोराइड. Okay, so out of that, lowest activity is seen when it is replaced with the hydroxyl group. After that hydrogen, after that cyano, after that methyl group will have some activity. After that chlorine, it increases the activity, and highest potency is seen when that X is replaced by CF3. So it is the highest potency. As in case of trifluoperazine, ये CF3 किसमें होता है? ट्राइफ्लूपराजिन में होता है, ट्राइफ्लूपराजिन. But that also increases the EPS, extrapyramidal symptoms. Okay, so that's why instead of trifluoperazine, most commonly used is a chlorpromazine. So in the chlorpromazine, here is a chlorine. यहाँ पे chlorine होगा chlorpromazine में. ट्राइफ्लूपराजिन में यहाँ पे ट्राइमिथाइल फ्लोराइड होगा, ट्राइफ्लोरोमिथाइल होगा, ट्राइफ्लोरोमिथाइल. So lowest activity is seen when X is replaced by OH. After that hydrogen, after that activity is there in the case of cyano, after that methyl, after that chloride. Highest potency is seen with the X is replaced by trifluoromethyl group. Okay, so potency is related with this carbon number 2. So electron withdrawing groups, they will increase the potency at carbon number 2. Second point देखते हैं चलो. At carbon number 3, C3 substitution increases the antipsychotic activity. That unsubstituted one, not C2. सपोज यहाँ पे C3 में कुछ अपने अल्काइल चेन डाल दिया, तो C3 सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस द एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी. देन अनसब्स्टिट्यूटेड वन, मतलब अनसब्स्टिट्यूटेड है, सो उससे ज़्यादा एक्टिविटी इंक्रीज होगा जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूशन एट अ कार्बन नंबर 3 विल इंक्रीज द एक्टिविटी देन अनसब्स्टिट्यूटेड और लिविंग एज सच, बट नॉट इन केस ऑफ C2. नॉट इन केस ऑफ C2. जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे अगर आपने मिथाइल वगैरह डाल दिया, मिथाइल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, phenyl aryl group, that will decrease the activity. So this carbon is reserved for only for electron withdrawing group, right? This is the second point. Now third point is nothing but the substitution of carbon number 1 and carbon number 4 reduces the antipsychotic activity. Suppose if you try to replace this carbon with some alkyl group or any moiety, so that decreases the activity. If you try to add any moiety at this carbon, that also decreases the activity. So antipsychotic activity is decreased, antipsychotic activity is lost if you add any substitution at a carbon number 4 and carbon number 1. Okay, so optimum activity, this carbon number 2 should be have electron withdrawing group. Okay, and then this is a, okay, we will see this substitution also. Nitrogen in the ring, this nitrogen, and nitrogen in the ring and nitrogen containing side chain. So nitrogen in the ring and nitrogen containing side chain. This nitrogen in the ring and nitrogen containing side chain. So these nitrogens, they are important for activity
the distance between these two nitrogen should be 3 carbon. The distance between these two nitrogen should be 3 carbon. So you can see over here first carbon, second carbon and third carbon. So distance between the nitrogen present in the ring and nitrogen in the side chain, the distance should be 3 carbon atom. If it is less, activity will be decreased. If it is more than that, activity again will be decreased. So it is the optimum for the activity. Okay? Distance between two nitrogen should be 3 carbon. And this was also once there was a question in this on this point in the GPAT. एक बार ऊपर question आ चुका है. Substitution on the side chain with the polar groups such as a phenyl dimethylamino or hydroxyl group result in the loss of activity. So substitution on the side chain with the polar groups, ये जो है ना R टर्मिनल है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे डाईमिथाइल होता है. R मतलब डाईमिथाइल, ठीक है, या फिर सिंगल मिथाइल. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मिथाइल और डाईमिथाइल और मैक्सिमम प्रोपाइल. सो if you try to replace that R by phenyl ring, if you try to replace that R by dimethylamino or hydroxyl group, so that result in the loss of tranquilizing activity, means antipsychotic activity is lost. Okay, so this is important. Again, oxidation of sulfur at a carbon number 5 decreases the antipsychotic activity, and side chain substitution with the phenyl diethylamine or OH group lost the activity. ये last one the point to penny. Next is nothing but the now these phenothiazines based upon the substitution at a nitrogen, terminal nitrogen, last वाला जो nitrogen होता है उसके ऊपर भी उसका substitution होता है. Depending on that, they are further classified into 3 types. So phenothiazines which are having propyl dialkyl amino side chain. So propyl dialkyl amino side chain. So in that you are going to have promazine, chlorpromazine, triflupromazine. Propyl dialkyl amino side chain. तो क्या है यहाँ पे जो R लिखा है, so add this nitrogen. So यहाँ पे क्या होगा CH2 that is propyl, then nitrogen propyl amino. Okay, और उसको नाइट्रोजन को 2 मिथाइल रहेगा. That is nothing but propyl dialkyl amino side chain. Okay, so for example you can see over here. So based upon the side chain they are classified again into 3 types. So phenothiazines which are having a propyl dimethylamino side chain, so like this is the propyl dimethylamino side chain. So it more okay. So in that you have these examples: promazine, chlorpromazine, triflupromazine. Okay, then second, so phenothiazines which are having alkyl piperidine side chain. So likewise that, for example you can see over here. So these are the phenothiazines which are having ethyl or alkyl piperidine side chain. So यहाँ पे CH2 नाइट्रोजन, उसके बाद में ये रहेगा alkyl piperidine side chain. So in that you are going to have examples of prochlorperazine, trifluperazine and thioethylperazine. So these are the examples which are having propyl piperazine side chain. Okay, now second are alkyl piperidine side chain. Now third is nothing but the phenothiazines having propyl piperazine side chain. So phenothiazines having propyl piperazine side chain. Propyl piperazine side chain कौन सा होता है? You can see over here 1 2 3 propyl piperazine 1 for nitrogen 6 member tree. That is known as the propyl piperazine side chain containing phenothiazine. So phenothiazines based upon the substitution present on the substitution in the terminal nitrogen, जो लास्ट वाला नाइट्रोजन होता है उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है. यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा? N CH2 N, ये कॉमन रहेगा. बेस्ड ऑन दैट, सो फर्स्ट क्लास इज नोन एज अ phenothiazine containing propyl dialkyl amino side chain. In that you are going to have promazine, chlorpromazine, triflupromazine, chlorpromazine and triflupromazine. So these are the phenothiazines containing propyl dialkyl amino side chain. Second होता है आपका phenothiazines containing alkyl piperidine side chain. So for example you can see over here ये alkyl piperidine. So in that you are going to have thioridazine, mesoridazine. So in the thioridazine structure, so these kind of side chain like this will be there. Okay. In case of
promazine, chlorpromazine, trifluoperazine. So this kind of side chain will be there. In case of trifluoperazine, thioethylperazine and prochlorperazine. Okay. So in that you are going to have structure side chain like this. Propyl piperazine side chain. So there are 3 classes of phenothiazine based upon the साइड चेन में उसमें क्या है कि उसमें प्रोपाइल डायमिथाइल अमाइनो साइड चेन है, उसके एग्जांपल प्रोमेजिन, क्लोरप्रोमेजिन, ट्राइफ्लोपेराजिन. अगर उस फिनोथाइजिन में प्रोपाइल पिपेराजिन साइड चेन है तो उसके एग्जांपल क्या रहेंगे? प्रोक्लोरपेराजिन, ट्राइफ्लोपेराजिन, थायोइथाइलपेराजिन. अगर उस फिनोथाइजिन में इथाइल पिपेरिडिल साइड चेन है या फिर सिंपली अल्काइल पिपेरिडिल साइड चेन है, अल्काइल में इथाइल भी आता है, मिथाइल भी आता है, प्रोपाइल भी आ सकता है. सो अल्काइल पिपेरिडिल साइड चेन. So in that thioridazine and mesoridazine, these are the examples. Are you getting? समझ रहे आपको? Are you getting? Okay. Now first structure from this phenothiazine. So we are going to see this SAR again from the book. So but I think these points are sufficient for GPAT, but I will explain few more points. Okay. So first structure is the chlorpromazine. Now you know that what is the use of chlorpromazine. So it is used in the treatment of psychosis, schizophrenia and mania. Okay. It also controls the excitation and aggression in the psychic patient. So what is the structure of that? It has this chlorpromazine also has a anti-emetic action. It has an antihistaminic action. Then it also has anti-emetic action. It has antipsychotic action. It is also sedative. Okay. It is also having antihistaminic action. It is also having local anesthetic action. So there are a lot of actions of chlorpromazine. So that's why chlorpromazine is known as a large actyl. We have already seen. Okay, large actyl. इसको large actyl बोलते हैं. What is the structure of chlorpromazine? So you can see, you have to draw the phenothiazine ring first. Phenothiazine ring. So this carbon is known as a 1, 2, 3, 4. This sulfur is 5, 6, 7, 8. So 8. Okay. So यहाँ पे chlorine है एक. So what is? Okay. So ऐसा थोड़ा सा अलग दिया है इन्होंने. So 3 into 2 chloro 10 हाइड्रोक्सी फिनोथाइजिन 10 यहाँ से कार्बन नंबर ये जो नाइट्रोजन है उसको 10 बोलेंगे. सो फिनोथाइजिन 10 NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन. NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन. ये NN डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, इसको 1 अमाइन. सो इन द अदर वे यू कैन से, सो यहाँ पे 8 क्लोरो 10 इंटू डायमिथाइल अमीनो प्रोपाइल फिनोथाइजिन, ऐसा भी बोल सकते हो. तो ये आईपैक नेम 2-3 टाइप के होते हैं. ठीक है. जैसे इन्होंने ये बेसिक रिंग ये बेस कंसिडर किया, आईपैक नाम दिया, या फिर आप पूरा इसको बेस कंसिडर कर सकते हो. तो यू कैन कंसिडर दिस एज अ बेस. फॉर एग्जांपल 8 क्लोरो देन 10. ओके. 8 क्लोरो 10 इंटू क्या रहेगा? डायमिथाइल अमीनो प्रोपाइल, एंड इसको बोलेंगे फिनोथाइजिन. Simply you can write the IPAC name like this. Okay. So either you can write 3 into 2 chloro 10 hydroxyphenothiazine 10 il NN dimethyl propane 1 amine, or you can also write this IPAC name in this way. So 8 chloro 10 into dimethyl aminopropyl phenothiazine simply. Okay. So second one is the very simple. So second structure in this phenothiazine is a प्रोमेजिन क्या होता है? इट इज़ आल्सो एंटीसाइकोटिक, एंटीइमेटिक, आल्सो एंटीहिस्टामिनिक. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सो जस्ट डिफरेंस याद रखना आपको. क्लोरप्रोमेजिन मतलब क्या, प्रोमेजिन मतलब क्या. सो प्रोमेजिन इज हैविंग लैक ऑफ दिस क्लोरो. क्लोरप्रोमेजिन में क्लोरीन होता है, यहाँ पे प्रोमेजिन में क्लोरीन नहीं है. क्लोरप्रोमेजिन मतलब क्लोरीन वाला फिनोथाइजिन, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है. सो सिंपली प्रोमेजिन. सो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज अ सेम. रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द सेम. आईपैक नेम भी वैसे है, सिर्फ क्लोरो निकाल दो. NN डाइमिथाइल 3 हाइड्रोक्सी 3 into 10 हाइड्रोक्सी फिनोथाइजिन 10 il प्रोपेन 1 अमाइन, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप लिख सकते हो 10 into डाइमिथाइल अमाइनो प्रोपाइल 10 into 3 डाइमिथाइल अमाइनो प्रोपाइल फिनोथाइजिन सिंपली प्रोमेजिन. Then trifluoperazine. So tri means 3, flu means chlorine atom. So in this you are going to CF3 group. So where it will be again at a like position like that chlorine in the chlorpromazine. तो वहाँ पे CF3 आएगा. ठीक है. So which is antipsychotic as well as antibiotic.
So you can see over here trifluoro. So N-dimethyl 3 into 2 trifluoroethyl 10 hydroxy phenothiazine 10 propanone. Or you can, in the other way, you can say, okay, you can say 8 trifluoromethyl 10 into dimethylammonopropyl phenothiazine simply. Okay, phenothiazine simply. Trifluoperazine. Next is nothing but the prochlorperazine. So prochlorperazine, in that you are going to have different side chain. अभी जो पहले देखे 3 ड्रग, उसमें क्या है कि डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल, ये साइड चेन था. अभी साइड चेन इसमें चेंज हो गया. क्या होगा उसमें? प्रोपाइल पिपरेडिल साइड चेन हो गया. सो इट इज used as a antipsychotic agent, tranquilizing agent, used to treat the various psychiatric disorders, schizophrenia, mania, psychosis, senile psychosis, and tonic psychosis. We have already seen the uses. So what is the structure over here? So you can see structure. यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया? बस डाइमिथाइल अमीनो की बजाय यहाँ पे क्या है? So piperidine. So you can see over here 2 chloro 10 into 4, यहाँ पे 10, कहाँ पे 10 है? यहाँ पे 10 into 4 मिथाइल. ओके, 10 into, इसको 1 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे. ठीक है, 1,4 नाइट्रोजन in the 6-member ring known as a piperazine ring. Okay, so 4 methyl piperazine 1-il मतलब 1 पे कनेक्शन है, 1-il propyl, then simply phenothiazine like this. So you can see नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप. 1 2 3 4, सल्फर इज 5 6 7 8 9 10 है ना. या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हो 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग तो सेम ही आएगा, बट जो वहाँ पे जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे नंबरिंग आना चाहिए ऐसा, इसलिए. सो यू कैन से 1 2 3 4, दिस सल्फर इज 5 एंड 6 7 8 9, अगेन नाइट्रोजन 10. सो दैट्स वाई 2 क्लोरो 10 इंटू क्या है? 3 कहाँ पे? यहाँ पे 1 2 एंड दिस 3 इंटू 4 मिथाइल पिपराजिन 1-il. तो इसको बोलेंगे 4 मिथाइल पिपराजिन 1-il प्रोपाइल, देन ये वाला प्रोपाइल एंड 10 हाइड्रोक्सी phenothiazine. So it is nothing but the prochlorperazine, simply prochlorperazine. So in the prochlorperazine you are going to have this piperidine side chain. Okay, piperazine side chain. This is structure of prochlorperazine. Next is nothing but the piperacetazine. So in this again you will have same side chain piperazine. Okay? But here difference is nothing but the, instead of chlorine you are going to have here hydroxyethyl. Okay, this is known as a this is known as a methoxy group. Okay, ethoxy group. So add C2 ethoxy. Okay, then nitrogen 10, in that you are going to have this hydroxy ethyl piperazine 1-il propyl phenothiazine 2-il ethanone. ethanone ये ethyl ketone है, CH3C double bond O, ethyl ketone. So ethanone. So C2 पे क्या है? कीटोन, ethyl ketone. So you can say, आप ऐसे भी IPAC नाम लिख सकते हो उसका, 2 ethanone 10 into 2 into then this hydroxyethyl piperazine propyl phenothiazine, ऐसा भी लिख सकते हो. There are 2-3 types of IPAC names. I will explain. That's why आप ये भी वाला भी लिख सकते हो, वो भी वाला भी लिख सकते हो. So ये वाला क्या है? 1 into 10 into 3, 1 into 10 यहाँ पे 10 into 3 कहाँ पे? ये वाला कार्बन क्या है? 3. 10 into 3 into इसका 4 क्या है? ये 4 में क्या है? हाइड्रोक्सीइथाइल. ये पूरा उसको क्या बोलेंगे? पिपराजिन. और ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला है प्रोपाइल. सो दैट्स वाई 1 into 10 into 3 into 4, 2 hydroxyethyl piperazine 1-il then propyl 10 hydroxy phenothiazine 2-il और ethanol, ऐसा लिख सकते. piperacetazine. Okay, prochlorperazine, piperacetazine, they are having piperazine side chain. Okay, now third is nothing but the ring analog of phenothiazines. So in that you are going to have chlorpro
chlorprothiazine. So in this there is just difference. So if you see the structure of chlorpromazine, the structure will look like same, but there is only one difference. There is no nitrogen over here. Nitrogen nahi hai. So that's why it's a ring analog of phenothiazine. Okay. So numbering will start again same thing. You can say 2 chloro 2. Okay, यहाँ पे इसको बेस एज अ बेस बोला है, इसको बेस बोला है. ओके 3 इंटू यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2 क्लोरो थायोजैंथिन. इसको रिंग को ये पूरा रिंग जो है ना उसको बोलते हैं थायोजैंथिन. इट इज नॉट अ फिनोथाइजिन रिंग, इट इज अ थायोजैंथिन बिकॉज इन द फिनोथाइजिन रिंग you will have nitrogen in the 10th position, at the 10th position, but here there is no nitrogen, so it is known as a thioxanthin ring. Okay. So that's why 3 into 2 chloro 9 hydroxy thioxanthin 9 ilidine. Okay. Then NN dimethyl 1 propane 1 amine. So NN dimethyl propane 1 amine. So इसको 1 बोला है. So chlorprothiazine, it is not a phenothiazine, it is a ring analog of phenothiazine. Okay. Then third आता है आपका thiothiazine. Okay. Next is thiothiazine. In that you are going to have structure like this. So similar structure will be there. Only addition part is there. So just instead of this second number chlorine, you will have over this dimethylamino sulfonate. ये से 2 NH, you can say sulfone और sulfonamide भी बोल सकते हो आप इसको. So again NN dimethyl 9 into 3 into 4 methyl piperazine. So 9 into 4 methyl piperazine. अभी इसका नंबरिंग चेंज होएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे 10 की बजाय यहाँ पे 9 आ जाए क्योंकि क्लोरीन को ही एक नंबर बोलेगा. Thiothiazine. Then dibenzazepine derivative. In that loxapine and clozapine is there. So clozapine. So they are not a phenothiazine derivative. They are known as dibenzazepine derivative. So your loxapine will look like this and clozapine will look like this. So this is the structure of your clozapine and loxapine. So I will explain that structure in the book also. Don't worry about that. So it is just a primary. Then next category आता है आपका antipsychotic में major category okay, known as a butyrophenones, or you can say fluorobutyrophenones. So general structure of butyrophenones will look like this. So there is a para fluoro, or you can say para halide benzyl ring, C double bond O CH2 3 times and NR. So NR means this is a nitrogen and this amine. Okay. So there are again three carbons are there. Okay. So general structure of butyrophenone. ब्यूटेरो क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कार्बन है और ये नाइट्रोजन. ब्यूटेरो ये 1 कार्बन है. ब्यूटेन है ना, इसलिए ब्यूटेरो. फिनोन क्यों बोलते हैं, फिनाइल रिंग है. और ओन क्यों बोलते हैं, कीटोन. ब्यूटेरोफिनोन, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेरोफिनोन. सो ब्यूटेन है यहाँ पे, है ना, कीटोन है यहाँ पे और फिनाइल रिंग है. सो दैट्स वाई ब्यूटेरोफिनोन. सो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेरोफिनोन. what are the sharp points? First, aryl group is optimum for activity. That is nothing but the fluorophenyl. So aryl group is optimum for the activity. This aryl group is optimum for activity. This should be present. Then only butyrophenones will have antipsychotic. Bridge between benzoyl group and amino group is unbranched propylene. Bridge between amino group and benzoyl. तो इन दोनों के बीच में जो है ना, अमाइनो ग्रुप एंड बेंजोइल, इसके बीच में देयर इज अ प्रोपाइलिन. ठीक है, CH2 प्रोपाइलिन. सो ब्रिज बिटवीन बेंजोइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप इज अनब्रांच्ड प्रोपाइलिन. ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए. ब्रांचिंग हुआ तो इट विल डिक्रीज द एक्टिविटी. सो आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहा है आपको. थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट द इस अमाइनो इज सब्स्टिट्यूटेड विद द piperidinial or tetrahydropiperidine.
तो यहाँ पे जो R है यहाँ पे पिपरीडिन रहेगा या फिर टेट्राहाइड्रोपिपरीडिन रहेगा, पिपरीडिनिल और टेट्राहाइड्रोपिपरीडिन. Greatest potency is noted when there is when in the tertiary amine, then secondary amine. Higher potency is there if this amine is a tertiary amine. If this nitrogen is tertiary, if it is secondary, it is also active. But mostly it should be tertiary. First structure is nothing but the haloperidol. So haloperidol, you know, haloperidol is used in the management of hyperactivity, agitation mania, schizophrenia. You know that Tourette syndrome also. So haloperidol. So you can see. So butane 1 on ये जो है ना, this is the base. Butane 1 on. Butane 1 on means butane and ketone. उसको बेस लेके इसको आईपैक नेम दे सकते हो. What is the base? Butane 1 on. Now you can see 4. इसको बोलेंगे कार्बन नंबर 1, 3 and this 4. So 4 into क्या है? 4 into 4, क्योंकि इसको 1 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे. 4 into 4, उसमें क्या है? फिर से 4 क्लोरोफिनाइल. सो 4 into 4 क्लोरोफिनाइल और 4 की जगह पे हाइड्रोक्सिल भी है. हाइड्रोक्सी इसको बोलते हैं पिपरीडिन, हाइड्रोक्सी पिपरीडिन. 4 into 4 क्लोरोफिनाइल, 4 पिपरीडिन, 1 इंटू क्या है? ये कार्बन नंबर 1 है. 1 इंटू क्या है? 4 फ्लोरोफिनाइल. सो 4 फ्लोरोफिनाइल, इसको क्या बोलेंगे प्रॉपरली? ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1. सो इजीली है, आईपैक नेम इजी है बहुत. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. This part is known as a butane 1 This part is known as butane 1 This is the base. Okay. So this ketone carbon present on the ketone, ये जो ketone वाला कार्बन है 1 बोलेंगे उसको. ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया. सो आईपैक नेम देखो 4 into 4 में क्या है? ये सब है. ये सब क्या है? 4 में है. ये सब क्या है? 4 में है अटैचमेंट. 4 into फिर से क्या है? पिपरीडिल रिंग है. तो उसके 4 पोजीशन पे भी क्या है? क्लोरोफिनाइल है. सो 4 into 4 क्लोरोफिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी पिपरीडिन, 1 इल, देन 1 पोजीशन पे क्या है? कीटोन के. ओके. सो 4 फ्लोरोफिनाइल, ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1. ओके. सो क्लियर. आईपैक नेम समझ में आया उसको? आईपैक नेम समझ में आया क्या? सर नो. आईपैक नेम समझ में आया क्या? ये सर नो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर. आईपैक नेम समजलं असेल तर हो बोला, नसेल तर नाही बोला, आणखी सांगतो. सो दिस की ये सर नो. आईपैक नेम समझला आहे का? आपको आईपैक नेम समझ में नहीं आया? अगर जो भी है आप बोलो मुझे, मैं आपको और बोलूँगा. यस, लेकिन बोलो, डजेंट मॅटर. आपको नाही समझ में आया, बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं सर सांगा आणखी एकदा, मी आणखी एकदा सांगेल. येस और नो प्लीज. ओके. सो ब्युटारोफिनॉन यांना काय म्हणायचं आपण? यांना म्हणायचं ब्युटारोफिनॉन. राईट. ब्युटारोफिनॉन म्हणजे काय? ब्यूटेन है ना. ब्यूटारोफिनॉन ब्यूटेनॉन आहे. काय असणार? ब्यूटेनॉन मतलब है ना, असंच ना, म्हणजे मिथेनॉन, इथेनॉन, प्रोपॅनॉन आणि ब्युटेनॉन. ब्युटेनॉन मतलब जसं असं इथेन, मिथेन है ना. मिथेन मतलब मिथेन म्हणजे काय? मिथाइल ग्रुप. इथेन म्हणजे काय? CH. ओके. इथेन मधले इथेन म्हणजे काय? CH3 है ना. प्रोपेन म्हणजे काय? CH3 CH2 CH3. लाईकवाईज दॅट. त्याच्यामध्ये जर कीटोन असलं तर सेम थिंग. मिथेनॉन, मिथाइल कीटोन असेल तर त्याला काय म्हणतात? मिथेनॉन. इथाइल कीटोन असेल तर काय म्हणतात? इथेनॉन. ब्युटाइल कीटोन असेल तर, प्रोपाइल कीटोन असेल तर प्रोपॅनॉन, आणि ब्युटाइल कीटोन असेल तर ब्युटेनॉन. इथं काय आहे? ब्युटाइल कीटोन आहे बघा है ना. सो कीटोनचं नंबरिंग कसं असतं? दिस कार्बन इज नोन एज 1, दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ थर्ड, दिस इज अ फोर्थ. नो ये बेस है आपका. लास्ट में आएगा ये ब्यूटेन 1 लास्ट में क्या आता है? ब्यूटेन 1 मतलब ब्यूटेनॉन. सो व्हाट इज द अटैचमेंट? 4 पोजीशन जो है ये 4th कार्बन ये वाला क्या है? इसमें 4 पोजीशन में ये सब है. क्या है? ये सब. तो ये क्या है? सो 4 into फिर से क्या है? 4 मतलब क्या है? इसको 1 बोलेंगे. नाइट्रोजन 1 2 3 4.
4 इंटू क्या है, इंटू ये और 4 क्लोरोफिनाइल, ये भी 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडिनिल, 1 इल, 1 क्योंकि वहाँ पे 1 पे अटैचमेंट है, 1 इल। और बाद में ये जो कार्बन 1 है इसमें क्या है अटैचमेंट, 4 फ्लोरोफिनाइल, सेम 4 4 4 4 क्लोरोफिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडिन, 1 इल, 1 इंटू 4 फ्लोरोफिनाइल, ब्यूटेन 1 ऑन, ब्यूटेन 1 ओन, समझ लो हाइपैक नेम ब्यूटेन 1 ऑन. Suppose butanone is there, at 4 position of butanone you have this moiety, okay, whole this moiety. This moiety is again numbered, so this one is numbered as 1 and this one is the 4th carbon atom, right? So at the 4th carbon atom again you have this chlorophenyl, so chlorine is at again 4th position of benzene ring, so 4 chlorophenyl with 4 hydroxy piperidinial, 1 इल, यहाँ पे क्या है एक में 1 into 4 fluorophenyl butane 1 that is the IPAC name of your haloperidol. Okay, so it is used haloperidol, you know, we have seen the all the uses and adverse effect and all that. So haloperidol is effective as a neuroleptic and also possesses the antiemetic property, but it produces the extrapyramidal effect, you know that. It also has a alpha adrenolytic property, weak alpha adrenal, in that it may exhibit हाइपोथर्मिक एंड एनोरेक्सियन प्रॉपर्टी. हाइपोथर्मिक मतलब ये आपका बॉडी टेम्परेचर को कम कर देगा. एनोरेक्सियन मीन्स इट विल प्रोड्यूस लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके, एंड पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ बार्बिचुरेट्स, जनरल एनेस्थेटिक्स एंड अदर सीनस डिप्रेसेंट, बिकॉज इट इज ऑल्सो डिप्रेसेंट, दैट्स व्हाई इट विल पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ अदर कंकरेंटली यूज्ड सीनस डिप्रेसेंट ड्रग. नेक्स्ट आता है इसमें ट्राइफ्लूपेरिडोल. ट्राइफ्लूपेरिडोल में क्या रहेगा, सो ऑब्वियसली ट्राइफ्लूपेरिडोल मतलब यहाँ पे 3 फ्लोरीन रहेगा, सो फ्लोरोमिथाइल. सो आईपैक नेम क्या होगा, अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस ब्यूटेन 1 1, ये हुआ आपका ब्यूटेन 1. सो एट द 4 पोजिशन ऑफ ब्यूटेन यू हैव 4 into 4 3 ट्राइफ्लोरोमिथाइल, यहाँ पे 1 4 into 4 into ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन और फिनाइल, ट्राइफ्लोरोमिथाइल फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडिन 1 इल, 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडिन 1 इल. देन उसके बाद में क्या है 1 into 4 फ्लोरोफिनाइल ब्यूटेन 1 इसमें और एक फ्लोरीन बताया यहाँ पे. सो दैट इज अ ट्राइफ्लूपेरिडोल, ठीक है, ट्राइफ्लूपेरिडोल. नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉपपेरिडोल. सो इन दैट you have a little bit different moiety at 4 piperidine 4. So यहाँ पे क्या है 1 into 4 diflurophenyl 4 oxobutyl 1 2 3 6 tetrahydropyridine 4 benzo imidazole. So यहाँ पे क्या रहेगा बेंज इमिडाजोल रहेगा. दिस इज नोन एज बेंज इमिडाजोल 2 ओन, बेंज इमिडाजोल 2 ओन, क्योंकि ये बेंज इमिडाजोल है, यहाँ पे 1 3 नाइट्रोजन होता है, 1 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, बीच में कितना है तो 2 ओन, बेंज इमिडाजोल 2 ओन. ओके, नाउ यहाँ पे नंबरिंग कैसा है 1 में क्या है 4 फ्लोरोफिनाइल, ठीक है, 1 में क्या है 1 into 4 into 4 फ्लोरोफिनाइल 4 oxybutyl, then 1 2 3 4 6 tetrahydropyridine 4 इल, ये pyridine 4 इल, benzimidazole 2 on, that is a ड्रॉपपेरिडोल. ओके, सो हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, ड्रॉपपेरिडोल. आपको अगर पूछेंगे आईपैक नेम तो मोस्टली आपको किसको पूछेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हेलोपेरिडोल का ही पूछेंगे. ये ट्राइफ्लूपेरिडोल में तो आपको इमीजिएटली समझ में आएगा, उसमें 3 फ्लोरीन है. तो हेलोपेरिडोल का आईपैक नेम इम्पोर्टेंट है, बस ट्राइफ्लूपेरिडोल का आपको इमीजिएटली याद हो जाएगा. और जैसे ही बेंज इमिडाजोल दिखा है उसमें बेंज इमिडाजोल, तो जस्ट उसको क्लिक करने का ड्रॉपपेरिडोल, देखने का ही नहीं क्या है. बेंज इमिडाजोल दिखा
है ना, ब्यूटारोफिनोन है स्ट्रक्चर, बेंजीमिडाजोल है, ड्रॉपेडोल, ठीक है। 3 फ्लोरीन है, CF3 ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप है, बाकी देखने का नहीं, ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप एंड ब्यूटारोफिनोन, ठीक है, फिनोन ये है ना ब्यूटारोफिनोन, तो क्लिक करने का ट्राइफ्लोपेडोल, ठीक। देन अगेन ब्यूटारोफिनोन है और क्लोरीन फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन, तो हेलोपेडोल को क्लिक करने का। हेलो मतलब क्या, हेलोजन, हेलो में हेलोजन, पेरिडोल, पेरिडोल, पेरी इज फॉर पिपरिडिन, ओके, पिपरिडिन, डॉल फॉर दिस अल्कोहल, हेलोपेरिडोल मीन्स, okay, so it is a butyrophenol derivative, halo means halogen, it is a fluorine and chlorine, peri means piperidine ring and all for alcohol, ऐसा उसका अपन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या उसको ब्रेक कर सकते हैं इस नाम को, बट आईपैक नेम याद रखना है, हेलोपेरिडोल 4 क्लोरोफिनिल, 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडिन 1 इल, 1 फ्लोरोफिनाइल, ब्यूटेन 1 on, ब्यूटेन 1 on, ओके। देन ट्राइफ्लोपेरिडोल का आईपैक नेम क्या होगा, 4 ट्राइफ्लोरोमिथाइल फिनाइल, ट्राइफ्लोरोमिथाइल फिनाइल इंटू इसको ट्राइफ्लोरोमिथाइल फिनाइल, सो 4 कहाँ पे है, ये पोजिशन 4 है, कार्बन 4 इंटू 4 मतलब ये 4, उसमें भी क्या है 3 फ्लोरोमिथाइल फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी पिपरिडिनिल 1 एंड 1 में क्या है 4 फ्लोरोफिनाइल, अगेन ब्यूटेन 1 on, सो दैट इज अ ट्राइफ्लोपेरिडोल। देन ड्रॉपेरिडोल में यहाँ पे सिर्फ बेंजीमिडाजोल आएगा बस। देन नेक्स्ट क्या है आपका रेस्पेरिडोन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, रेस्पाइरिडोन, रेस्पाइरिडोन का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, सो इट इज अ रेस्पाइरिडोन, अगेन इट इज अ बेंजीनडोल, benz isoxazole, so benz isoxazole, this is a benz isoxazole, benz isoxazole क्यों बोलते हैं उसको, this is a benzene ring and this is oxazole, so oxazole नेम, oxazole कैसे होता है, ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 3 होता है, बट यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन 2 है, तो इसलिए उसको आइसोऑक्साजोल बोलते हैं, आइसो मीन्स नियर बाय, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बेंज आइसोक्साजोल, ओके। ये क्या है पिपरिडिन, ओके, बेस बोलेंगे इसको पिरिमिडिन 4 तो दिस इज अ पिरिमिडिन, ये जो रिंग है इसको बोलते हैं पिरिमिडिन, नो स्ट्रक्चर इसका आईपैक नेम क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 फ्लोरोबेंजोल, ओके, 3 किसको बोलेंगे, दिस कार्बन इज 3 इंटू 2 इंटू 4 6 फ्लोरोबेंज आइसोक्साजोल, 6, ये 6 है, ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 2 3 4 5 6 है, 6 फ्लोरोबेंज आइसोक्साजोल 3 इल 1 2 3 इल क्यों, 3 के ऊपर अटैचमेंट है 3 इल, पिपरिडिन 1 इल क्यों बोला है, अटैचमेंट 1 में, पिपरिडिन 1 इल 2 मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल है ना, 2 मिथाइल 6 7 8 9 टेट्राहाइड्रो पायरिडोल, टेट्राहाइड्रोपायरिडोल, पिरिमिडिन 4 on, ये पिरिमिडिन है, 4 कीटोन, दैट्स व्हाई पिरिमिडिन 4, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस आईपैक नेम, इतना डीप में नहीं आता है कभी, रेस्पिरेडोन स्ट्रक्चर याद ऐसा पढ़ने के लिए है। देन बीटा अमाइनो कीटोन, सो इन दैट यू हैव मोलिंडोन, बीटा अमाइनो कीटोन में मोलिंडोन, तो यहाँ पे क्या होगा लिंडोन, यहाँ पे देखो लिंडोन मतलब क्या, लुक लाइक अ इंडोल, सो हियर इज अ indole structure in this drug, so molindone means there is an indole structure, you can see it is indole, this is indole, there is a ketone, so indole one is there, so that's why lindone, so indole plus ketone lindone, यहाँ पे देखो 3 ethyl 2 methyl 5 morpholine methyl 1 morpholine methyl 6 7 dihydro indole 1, 6 7 dihydro indole 1, 3 ethyl कहाँ पे, so you can see, so this is indole है ना, बेंज इंडोल बोलते हैं इसको, तो नाइट्रोजन इज नोन एज 1, दिस 2 दिस 3, तो 3 ethyl 2 methyl 3 ethyl 2 methyl 5 into 1 2 3 4 and this 5 into क्या है
morpholinomethyl. This ring is known as the morpholino ring. Morpholinomethyl. Okay. 6,7 डायड्रो इंडोल 4 ओन. इंडोल की पोजीशन का जो 4 है उसके ऊपर क्या है कीटोन है इंडोल 4. सो ऐसा नोमेनक्लेचर होतं है. आयपॅक नेम समझ में आया इसका? समजलं का आयपॅक नेमचं? असेल तर विचारा आपण थोडंसं काय आहे तुम्ही फोडून शिका. सो आपने अगर ब्रेक करके पढ़ लिया ना तो आपको फटक से याद हो जाएगा. वो याद करने की जरूरत नहीं. ब्रेक करके फोड़ो, ब्रेक करो उसको स्ट्रक्चर को. कौन सा क्या है अभी इसको मॉर्फोलिन रिंग बोलते हैं. सो दिस वन इज इंडोल. ठीक है, ये इसको इंडोल बोलेंगे अपन. बेंज इंडोल. वहाँ पे कीटोन है इसलिए इंडोल नोन है ना. इंडोल 1. सो इंडोल में जो नाइट्रोजन है उसको 1 नंबर है. उसके बाद में ये 2 नंबर वाला कार्बन, ये 3 नंबर वाला कार्बन. दैट्स वाई 3 इथाइल. ओके, 3 इथाइल 2 मिथाइल. ये यहाँ पे आएगा 3, ये 4, ये 4 आएगा, ये 5 है. सो 5 इंटू morpholinomethyl 1 इल 6,7 डायड्रो 1 हाइड्रोक्सी इंडोल 4 ओन. इंडोल 4 ओन हो गया उसका नाम मोलिंडोन. सो इतना याद रखो कि मोलिंडोन इन दैट यू हैव ओके इंडोल इन द स्ट्रक्चर. इंडोल कीटोन. दैट्स व्हाई मोलिंडोन इंडोल कीटोन. सो बीटा अमाइनो कीटोन डेरिवेटिव. बेंजामाइड एंड सल्फाइड is also there. There is no need to remember the structure of this. सल्फाइड लिवोसल्फाइड, सल्फिराइड लिवोसल्फाइड, इतना याद रखने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट तो आपका एंटी डिप्रेसेंट्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स. So in that you have 2-3 classes. First is a tricyclic antidepressants. So tricyclic antidepressants. So in that you have imipramine. So imipramine का स्ट्रक्चर कैसे होगा? You can see. So numbering will start from this. Again it is a tricyclic compounds. Tricyclic है, but it is not a phenothiazine derivative. Phenothiazine नहीं है. So numbering will start from this carbon 1, 2, 3, 4 and 5. Actually they are known as a dibenzazepine. Dibenz क्यों? There are 2 benzene. ठीक है, 2 benzene dibenz. Azepine क्यों? 7-membered ring with the 1 nitrogen known as azepine. 7-membered ring with the 1 nitrogen known as azepine. So dibenzazepine. Dibenzazepine. All these tricyclic antidepressants mostly they will have dibenzazepine ring. So numbering will start from this. This is 4, nitrogen is 5, and 6, 7, 8, 9, 10. These 4 structural aspects are there. यहाँ पे so this third position is important. This 10-11 carbon double bond between 10-11 is there or not? That is important. Side chain in the nitrogen is important. So first structure is nothing but the imipramine. What is imipramine? You can see numbering कहाँ से होता है और आयपॅक नेम कैसे है. So in the imipramine 5. 5 into क्या है 1, 2, 3. 5 into 3 3 into dimethylamine. 3 into dimethylamine. 5 into 3 into 5 into 3 methyl amino propyl. Dimethylamino ये लास्ट में है propyl. Dimethylamino propyl. 10-11 डायड्रो. 10-11 डायड्रो क्यों? इसमें डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए 10-11 डायड्रो. 5 हाइड्रोक्सी डाइबेंजाज़ेपिन. इमिप्रामाइन का आईपैक नेम ऑलरेडी पूछा है एक बार एग्जाम में. सो 5 into 3 डायमिथाइल अमाइनो प्रोपाइल 10-11 डायड्रो 5 हाइड्रोक्सी डाइबेंजाज़ेपिन. दैट इज इमिप्रामाइन. क्लोमिप्रामाइन क्या है? बस क्लोरीन ऐड कर दो इमिप्रामाइन में. कहाँ पे? पोजीशन नंबर 3 के ऊपर. सो जस्ट ऐड क्लोरीन ग्रुप इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ इमिप्रामाइन एट थर्ड पोजीशन. यू विल बिकम अ क्लोमिप्रामाइन. सो ऑब्वियसली क्लोरीन ऐड किया तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? 3 क्लोरो है ना. बाद में 5 into डाइमिथाइल प्रोपाइल 10-11 डायड्रो 5 हाइड्रोक्सी डाइबेंजाज़ेपिन. दैट इज द स्ट्रक्चर. दैट इज आईपैक. सो इमिप्रामाइन क्लोमिप्रामाइन में क्या फ़र्क है? सिर्फ थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है क्लोमिप्रामाइन में. क्लोमिप्रामाइन इस नाम में देखो क्लोमिप्रामाइन. क्लोमिप्रामाइन मीन्स क्लोरीन है उसमें. इमिप्रामाइन है ना. तो इमिप्रामाइन क्या है आपको मालूम है, तो उसमें क्लोरीन रखना है. क्लोरीन प्लस इमिप्रामाइन क्लोमिप्रामाइन हो गई. इससे सिंपल हो गया. नेक्स्ट अमीटिप्टिलिन. इन दिस अगेन स्ट्रक्चर
इट इज़ नोन एज दिस रिंग इज नोन एज नाउ इट इज नोन एज इम्यूनोस्टिल्बिन. ये जो रिंग है उसको इम्यूनोस्टिल्बिन होती है. दैट इज डायबेंजो 10-11 डायहाइड्रो साइक्लोहेप्टेन रिंग. डायबेंजो डायहाइड्रो, यहाँ पे कोई डबल वन नहीं था, डायहाइड्रो. एंड ये रिंग कौन सा है? साइक्लोहेप्टेन रिंग है. डायबेंजो साइक्लोहेप्टेन रिंग इज देयर. डायबेंजो साइक्लोहेप्टेन इज आल्सो नोन एज इम्यूनोस्टिल्बिन रिंग. इम्यूनोस्टिल्बिन रिंग. सो दैट इज इन द अमिट्रिप्लिन. सो रिमेंबर यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड 1, 2 and 3 अगेन. सो नंबरिंग कहाँ से होता है इसका? देखो आप यहाँ पे जैसे वैसे 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 into 3 dimethyl amino propylidine 5 hydroxy dibenz dihydrocycloheptane. That is a IPAC name of amitriptyline. तो याद कैसे रखना है? स्ट्रक्चर तो सिमिलर दिख रहा है आपको, बट बस डिफरेंस है. इमिप्रामाइन में क्या है? नाइट्रोजन है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे उसको? डायबेंजोअज़ेपिन. अज़ेपिन मतलब 7 मेंबर रिंग प्लस नाइट्रोजन. अगर 2 नाइट्रोजन है 7 मेंबर रिंग में तो बन जाएगा डायबेंजोअज़ेपिन. सो बट यहाँ पे इन अमिट्रिप्लिन देयर इज नो नाइट्रोजन, सो इट इज अ साइक्लोहेप्टेन. डायबेंजोसाइक्लोहेप्टेन रिंग. यहाँ पे डायबेंजोअज़ेपिन रिंग. सो अमिट्रिप्लिन 5 into 3 into डायमेथाइल. देखो 5 into ये क्या है? थर्ड कार्बन है. 1, 2, 3. थर्ड इंटू डायमेथाइल अमीनो प्रोपाइल और प्रोपिलिन बोल सकते. प्रोपाइल 5 हाइड्रोक्सी डायबेंजो 10-11 डायहाइड्रो साइक्लोहेप्टेन. बस साइक्लोहेप्टेन देखा तो क्लिक करने का अमिट्रिप्लिन पे. अज़ेपिन है मतलब क्या? इमिप्रामाइन हो सकता है, क्लोमिप्रामाइन हो सकता है. तो पहले अपन अमिट्रिप्लिन के बारे में बोल जाओ 1 मिनट. दिस इमिप्रामाइन इज कन्वर्टेड इनटू वन metabolite known as desipramine. Imipramine is also converted into metabolite known as a desipramine in the body. So active metabolite of imipramine is a desipramine. So what is the difference? Difference क्या होगा imipramine and desipramine में? Just removal of this methyl. नाम में रखा है desipramine. Desipramine मतलब क्या? Demethyl imipramine. So there is a demethylation of imipramine. Imipramine का demethylation होता है कहाँ पे? यहाँ पे. There is only one methyl. आईपैक नेम का हुआ 5 into 3 मिथाइल प्रोपाइल अमाइनो. वहाँ पे डाईमिथाइल अमाइनो प्रोपाइल था. यहाँ पे क्या? 3 मिथाइल अमाइनो प्रोपाइल 10-11 डायहाइड्रो 5 हाइड्रोक्सी डायबेंजोअज़ेपिन. डेसिप्रामाइन. डी मतलब डे इज द DE इज द टर्म फॉर डीमिथाइलेशन. डीमिथाइल इमिप्रामाइन. इमिप्रामाइन है उसमें. डेसिप्रामाइन में ही डेस निकाल दो, इमिप्रामाइन बचता है. मतलब क्या? डी फॉर डीमिथाइलेशन ऑफ इमिप्रामाइन. डीमिथाइलेशन का मिथाइल ग्रुप कहाँ है? इमिप्रामाइन में. बस यहाँ पे तो एक मिथाइल ग्रुप निकाल दो, बन जाएगा आपका डेसिप्रामाइन. सो देयर इज अ डीमिथाइलेशन ऑफ इमिप्रामाइन इन द बॉडी एंड यू विल गेट अ डेसिप्रामाइन. डेसिप्रामाइन इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन. क्लोज. ओके. लाइकवाइज दैट जैसे अमिट्रिप्लिन देखा है अपन ने. सो अमिट्रिप्लिन. ओके. सो अमिट्रिप्लिन इन दैट यू आर डायबेंजोसाइक्लोहेप्टेन रिंग. ओके. सो 5 into डायमिथाइल अमाइनो प्रोपाइल डायबेंजोसाइक्लोहेप्टेन रिंग. So likewise that amitriptyline is also converted into active metabolite known as nortriptyline in the body. Nortriptyline. What is the structure of nortriptyline? उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? आई थिंक यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो निकल जाता है, फिर एक मिथाइल निकल जाता है. आई थिंक ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा. सो अमिट्रिप्tyline एंड नॉर्ट्रिप्tyline उसमें डिफरेंस देखना है आपको. देखते ही बुक में आएगा बाकी. सो बट यहाँ पे कुछ तो भी रिमूव होता है इधर मिथाइल और सी दैट. बाद में आपका एक ड्रग आता है क्लोजापिन का स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे. एक्चुअली इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट. एक आध बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर आईपैक नेम के ऊपर या फिर सार के ऊपर. क्लोजापिन 8 क्लोरो 11 into 4 मिथाइल पिप्राजिनिल 1 5 हाइड्रोक्सी डायबेंजो डायजेपिन. अभी देखो बेंजो डायजेपिन का स्ट्रक्चर होता है ये. डायबेंजोअज़ेपिन 1 2 3 4 डायबेंजो डायजेपिन. डाई मतलब 2, एजे मतलब नाइट्रोजन. डायबेंजो डायजेपिन. डायबेंजो देयर आर 2 बेंजीन रिंग 7 membered cycloheptane ring. In that there are 2 nitrogen.
and this position number. So there is a methylpiperazine, position number 4. So this nitrogen is D1 number as 1, 4, and this nitrogen is 5. This is known as 8. 8 chloro 11 into 4 methylpiperazine, 4 methylpiperazine dibenzodiazepine, means a clozapine. Then we will see MAO inhibitors. Antidepressant में आता है आपका second MAO inhibitors, monoamine oxidase inhibitor. So in that first is a iproniazide. Okay. So iproniazide मतलब क्या? Nicotinamide dimethylaminohydrazine. Iproniazide. Nia for nicotinamide. Okay. This is nicotinamide. Pyridine. It's isopropyl. And this is NH2 C double bond O is azide. So iproniazide. Tranylcypromine. It is a Cipro for cyclopropane. याद रखना है Cipro for cyclopropane. Tranylcypromine trans 2-phenyl cyclopropylamine. Trans 2-phenyl cyclopropylamine. Cyclopropylamine कहाँ पे है ये cyclopropyl? Trans 2-phenyl cyclopropylamine. That is a tranylcypromine. Tranyl मतलब tra for trans, cypromine. Tranylcypromine means nyl for phenyl. Cypromine means cyclopropylamine. Trans 2-phenyl cyclopropylamine is a tranylcypromine. Simply. Then phenelzine is, ये तो बहुत सिंपल. phenelzine मतलब फिनाइल लेंगे और क्या रहेगा एजिन. 2-phenylethyl hydrazine. 2-phenylethyl hydrazine. 2 कहाँ पे? फिनाइल 1 कार्बन. phenylethyl hydrazine. NH2 hydrazine. phenelzine means 2-phenylethyl hydrazine. नेक्स्ट आता है आपका सेलेजिलिन. ओके. N-methyl, N-propyl, alpha-methyl phenylethylamine. N-methyl के बोलते हैं नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है. N-methyl. N-propyl क्यों? इसके ऊपर एक प्रोपाइल ग्रुप है. कहाँ पे? दिस कार्बन इज नोन एज 1, दिस कार्बन इज नोन एज 1, दिस कार्बन इज 2, दिस कार्बन इज 3. सो N-methyl, N-propenyl alpha-methyl phenylethylamine. Alpha-methyl ये मिथाइल अल्फा पे, मिथाइल फिनाइल इथाइल एंड अमाइन. आता आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI. सो इन दैट यू हैव फ्लोएक्सेटिन. फार्माकोलॉजी में आता है. सो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. फ्लोएक्सेटिन का स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है. ठीक है. सो फ्लोएक्सेटिन आईपैक नेम देखो. N-methyl 3-phenyl, N-methyl 3-phenyl. N-methyl मतलब ये N-methyl. ठीक है. 3-phenyl ये इसको 1 बोलेंगे. 2 N-methyl 3-phenyl 3-trifluoromethyl. N-methyl 3-phenyl. N-methyl 3-phenyl 3,4-trifluoromethyl phenoxypropylamine. तीन कैसे बोलना है इसको अभी देखना पड़ेगा. सो फ्लोएक्सेटिन, देन पैरोक्सेटिन. चलो इसका आईपी नेम छोड़ दो, आप देखेंगे. पैरोक्सेटिन, देन फ्लोएक्सामाइन. These are known as a MAO. These are known as a selective serotonin reuptake inhibitor. Fluoxetine, paroxetine, and fluoxamine. Then atypical antipsychotics में atypical antidepressant. These are known as typical antidepressant MAO inhibitors, and this is RI, selective serotonin reuptake inhibitor. They are known as a typical one. Atypical वाले होता है trazodone, venlafaxine. Trazodone, venlafaxine हो गए. So trazodone, venlafaxine. एंड लास्ट में सर्टिलिन भी आता है. सो इसका स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए. सो ट्राजोडोन में याद रखना है आपको. ट्राजो क्या है? ट्राजो मतलब ट्रायाजो. ट्रायाजो मतलब क्या? 3 नाइट्रोजन. ट्राजोडोन 3 नाइट्रोजन. ट्रायाजो एंड कीटोन भी है. ट्रायाजोडोन. ओके. ट्रायाजोडोन ये बस याद रखना है कि ट्राजोडोन में क्या है? ट्रायाजो ग्रुप है. ट्रायाजो एंटीटोन. ट्राजोडोन. ठीक है. नेक्स्ट. सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन द बुक ऑल्सो. डोंट वरी. बुक में थोड़ा सा और डिटेल में है, समझ में